Okay, so first of all I'm going to launch an instance. Okay, so it will be very quick because yesterday I have already explained how to create the cluster in very detailed manner, so I will not take much time on creating the cluster. So I will just doing the steps and quick and faster. So Ubuntu machine I will take. If you have any question, you can just ask me in between. Just I'm creating the cluster here. T2 large, that is good for me, and I will key k8 Mumbai. Okay, I have already security group that all allow traffic. Okay, it is created. I have my repo here. This is the repo URL I have already shared in yesterday. It is just a step you can click one by one, that will create a cluster, nothing else. Okay, it is blindly you can take copy and paste it will blindly create a Kubernetes cluster from the Minikube. Minikube is like a tool, like it will help you create the cluster. First of all I will sudo update. It will update the packages list in your machine. So this is my master machine. I'm going to create here. I'm going to connect this machine, connect here, Ubuntu and connect. एक्सक्यूज मी अंशुल, मिनी क्यूब एक क्लस्टर है, मतलब उससे हम क्या, मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या मास्टर्स में, अब मास्टर में करेंगे, किस में करेंगे ये टूल अपडेशन? We have EKS, right? We have cube ADM, right? We have mini cube, right? These are the tools. Okay, and आपका Azure का भी होता है AKS, Azure Kubernetes Service. So these are our utility. This is the tools which help to create the cluster. This is the open source. This is the open source. This is the Amazon service. This is the Azure Kubernetes service. It's like a tool. Like मार्केट में क्या क्या होता है, AWS होता है, Azure GCP होता है. नहीं नहीं, टूल से करोगे क्या सर, ये बता दो बस। It will create the cluster. बस, मतलब आप मास्टर में करोगे, Yes, yes. मतलब किसमें इंस्टॉलेशन? अच्छा, हाँ हाँ, master में. So first of all apt update, it will update the package list. Then copy this command, it will now install the curl wget apg transport http package. Then what I will do, I will install a docker here because runtime engine is docker. Docker is being installed. Then it will enable the docker. It will start the docker service. Then this is the user, so user can give, I will give the permission to user. Ubuntu is the user. Ubuntu can access the docker command. कोई डाउट हो पूछ लेना, बिकॉज मैंने स्टडी बहुत डिटेल में बताया था. फिर भी अगर कोई डाउट हो, देन I will install the minikube here, minikube tool, minikube utility, whatever you want to say. It will install the minikube package. Okay, this is the minikube package is being installed. It will create the cluster, then give the permission to minikube, so it will be executable format. chmod plus x में executable. Then kubectl install, so it will install the kubectl. It's a command line interface. Okay, like if you are going to do kubectl get pod, everything you will do in your Kubernetes, so that will be done by the this kubectl. So we need to install kubectl in your machine. Okay, kubectl package is being installed. Now I will give the permission to kubectl plus x mean executable permission, and then move kubectl executable package to the bin directory, so it will, you can execute directly by kubectl only.
then क्या step है, start mini cube, it will start the mini cube under the runtime engine is Docker. It will take 1 or 2 minutes. So we are just creating the Kubernetes 1.28. मिनी नाम से समझ आता है कि एक छोटा सा क्लस्टर होता है, प्रोडक्शन में हम यूज वी विल नॉट यूज इन प्रोडक्शन, बट आपका इफ योर प्रोडक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल देन क्यूब मिनी क्यूब इज आल्सो गुड सॉल्यूशन. But for your information, like if your company is using the AWS, so then they might be using the EKS. Okay, if your company is using the on prime, so then they will they must be using, I think they must be using KubeADM, because it's a open source and it is not a paid service. EKS is a paid, KubeADM is not paid, but EKS is a managed service, so they will manage their node. Master will not will never go down in any case. EC2 will never go down, but in KubeADM you need to manage your machine and all. If your machine is down, if your server is down, then Kubernetes will down. But in the case of EKS, uh, AWS will guarantee us, like it is a 0.001% downtime only. So it is a managed service. EKS is a managed service. Same way we have Azure AKS, that is also managed and paid service. But KubeADM is a free service, open source, and Minikube is also the free service, open source, right? But it is not recommended for the higher load configuration. So you can use, like if your production, your server is very very small, your architecture is very very small, then it is good way, good solution. Welcome. Yeah, Kavya, you have asked question. Yeah, your voice is breaking actually. I don't know if it's only for me. There's a lot of disturbance. Maybe your mic. So is it for all or is it for only Kavya? Sir, for me it's okay. And other Komal, is it for you? सेम प्रॉब्लम. अब भी सही नहीं आ रही है क्या अब? अब ठीक है, बेटर है. अच्छा ठीक है. Yeah. Okay, so now we have created the Kubernetes cluster. Kubectl get nodes. One node is ready. Control plane 45 minutes. सर मुझे समझ में आया क्या प्रॉब्लम हो रहा है. सर आप थोड़ा माइक पीछे रखो बोलने से, तो वो आपकी ब्रीदिंग थोड़ा सा पीछे रख लो माइक को. अब सही आ रही है? अब ठीक है. ठीक है, वो मैंने बिल्कुल मुंह पे लगा लिया था, शायद से ऐसा आ रहा होगा. कोई नहीं. अब तो गायब ही हो गई है अंशुल. अब सही आ रही है? क्या बात है, हाँ हमें तो बहुत ठीक है. अच्छा. ठीक है ठीक है, इतना ही डिस्टेंस रखता हूँ मैं. ठीक है. So I get Kubernetes kubectl get nodes. So it is being ready state kube control plane mode. 45 per second version is this version. Now kubectl. Yesterday I thought explained you kubectl some basic command get ports. So I don't have any port, right? So I will create a namespace kubectl create namespace prod. Okay, and I want to check like how many namespace are there. Kubectl get namespace को short में ns. Okay, so I have default, these are default namespace, and I have created manually, that is production namespace 13 second ago. First of all, as a DevOps person, you need to check, verify, like your cluster is healthy or not. How to check your cluster is stable or healthy? kubectl get pods -n kube system. Okay, so if your it is all the component code DNS etcd QPS server controller a proxy scheduler provisioner, if all components are running in state, then you can say your cluster is healthy. Your cluster is healthy. Okay, one by one.
Sir, this is a command kubectl gets pod minus n cube system sir. हाँ, ये पूरा नेम स्पेस sir kubectl get ns, that is a namespace, यस right? यस यहाँ आपने क्रिएट कर दिया ऊपर, हम्म क्रिएट एनएस पॉड, ठीक, यहाँ आपने गेट किया, राइट? हम्म गेट पॉड्स माइनस एन, ये क्यूब सिस्टम क्या है सर? ये क्या कर रहा है? क्यूब सिस्टम इज अ नेम स्पेस वेयर Kubernetes अच्छा, ये नेम स्पेस। component will be there. This is the database of हम्म, Kubernetes. This is the हम्म, CPU of Kubernetes. This is the proxy. This is हाँ, the एपी scheduler. सर्वर प्लीज। ठीक है, these are the component, main component of Kubernetes. If all should be running in the running state, then your cluster is healthy state. So this is ये हुई पहली बात. So replica set. ये हमारा this is a replica set for your Kubernetes. Okay, all the example are there, but what you need to do, you need to just change the values as per your requirement. This is the just official documentation always recommended to follow. So first of all, I will create rs.replicaset.yaml. Here if you want to create the replica set, what it will do I will explain, but just like it's a replica set, it's a like a deployment. Okay, it will create the replicas. Okay, and what should the name of your replica set, suppose that what I say, app. Okay, app 1, and then labels, how many label you want to define here. So you can define multiple level here, and one need to be focus here, it should be the same one, tier front end and tier front end. If both are different, then it will show the error. Okay, here you can define the multiple levels, like you want to check like how many pods belong to app is equal to guest book, so it will show you 3 pods. Or if you want to check also like how many pods belong to tier is equal to front end, so it will show you the 3 pods as well. So this is a just of filtering, like if you have 150 pods and you want to filter how many pods in 150 uh, app is equal to guest book, so this is just a एक up है, you can ask a question. Yeah, actually, you yesterday also you showed these labels, right? There you had defined only one label, but Hmm. here you have defined two labels, and then one of the labels you're taking it under selector. Hmm. So why we have to define two labels here? It's a choice, like you can define a multiple layers, like just for example, uh, tier is equal to front end. It's a choice, like you can define n number of labels here, like just for example environment is equal to prod. This define belong to environment is equal to prod. Okay, and it also works for environment is equal to prep. Okay, Okay, but in deployment object, you right? can also In define deployment. multiple, you can also define multiple. Ah, okay, okay. But only one has to be defined under selector. Yes, yes, it should be the same Here only. we cannot. Here we cannot define multiple. Yeah, you can define multiple, but there is no Okay. requirement, because every time you will filter it out, because the use case is here, like you want to filter, like you have 150 pods, you want to filter it Okay. out, so you will have to filter it out with this label. So it will only work for the deploy with replica set only. It is not for your case.
it will work सर on ये रेप्लिका सेट का हम कर क्या रहे हैं सर? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है, अभी मतलब ये बताऊंगा। वीआई से क्या कर रहे हैं हम? हाँ अभी बताऊंगा। अभी जितना मैं बता रहा हूँ उसको देखो, मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या काम करना है, क्या यूज़ केस है। ठीक है। नहीं नहीं, मतलब यही कर क्या रहा है सर? मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है ये क्रिएट ये करेगा रेप्लिका थ्री सेट से। रेप्लिका सेट, क्रिएट करेगा थ्री पॉड, इट विल क्रिएट द अच्छा, थ्री थ्री पॉड। पॉट। ओके ओके। लाइक यू वांट अभी टू ठीक क्रिएट द सर। 50 पॉड, 20 पॉड, 30 पॉड। ओके, सो इट विल क्रिएट इन वन गो ओके। ओनली। और एक ये बात बाकी बताओ, सब क्या कर रहे हैं सर बाकी? बाकी ये कि सिलेक्टर लेवल है, फ्रंट एंड है, हम्म। टेम्पलेट है। टेम्पलेट ये इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑन विच कंटेनर विल बी क्रिएटेड। ये कंटेनर के लिए ब्लूप्रिंट है टेम्पलेट। टेम्पलेट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर कंटेनर। सर एक बार आप जो बोले हैं ना वो वही कॉन्ट्राडिक्टी हो रहा है, एक बार फिर से बोलिए। टेम्पलेट इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर द कंटेनर। ओके। Container will be created with this label. Okay, and this is the label. You can filter it out for your own uh, betterment or easiness. मतलब these are the blueprint for the Yes, containers। yes। टेम्पलेट का मतलब ये तो होता है, टेम्पलेट टेम्पलेट ब्लूप्रिंट, ये तो होता है। समझ गया सर, हाँ ठीक है सर। जो तुम डिफाइन करोगे यहाँ पे टेम्पलेट में, उसी के अभी यहाँ पे कंटेनर हम्म, क्रिएट हो जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है। एंड दिस इज सेलेक्टर। सेलेक्टर विल हेल्प रेप्लिका सेट टू आइडेंटिफाई देयर पॉड। Like suppose that I have 150 for tier is equal to front end, right? So replica set will identify like how many pods belong to tier is equal to front end. It will identify like only 3 pods are tier is equal to front end, so it will belongs to this replica set. So selector means it will select their pod with the help of label. Selector का मतलब क्या होता है? Selector is equal to selecting, which is selecting their pod. How to choose their pod? Replica set work on the algorithm with the help of selector. It will select their pod. I have thousand of pod, so selector will select their pod. काव्य थोड़ा क्लियर हुआ पहले से? Is it clear? Yes, yes. It is, yes, yeah. It is Because just like deployment, right? There हाँ also you had given some हाँ हाँ labels. हाँ, Yeah, सेम इट्स बिल्कुल, yeah, इट्स अ बेसिक इंग्लिश, राइट? सेलेक्टर सेलेक्टिंग देयर yeah. पॉड, चूजिंग देयर पॉड, आइडेंटिफाइंग, मतलब इतने सारे पॉड है, सो हाउ टू डिफाइन देयर पॉड, सो इट्स अ सेलेक्टर। टेम्पलेट, Okay. टेम्पलेट इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट, Yeah. Okay. and Yeah, got it. these are labels for you. You can give n number of label here. Okay. So you can identify like environment is equal to pod, how many pods belong to a pod. You can, it's for your easiness, so you can define n number of here. Okay. Yeah. Thank you. सर ये तो दैट इज एक एनवायरनमेंट तो प्रोडक्शन का हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट किसका था? दो एनवायरनमेंट लिखे थे ना ऐसा आपने, एक ऐसा प्रोडक्शन और। ऐसा होता नहीं है रियल हाँ केस में, मैं बता रहा था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, वही मैं सोच रहा था। हाँ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा समझाने के बता रहा था मैं, इसलिए एक बार में एक ही एनवायरनमेंट के लिए होता है। ठीक है। तो मान लो कि प्रॉड एनवायरनमेंट के लिए टीयर फ्रंट एंड ये हो गया, और कंटेनर विल बी क्रिएटेड PHP Redis. I will use Nginx. This will be easy. Nginx latest. अच्छा सॉरी, यहाँ ऊपर नेम आएगा, मैंने क्या लिख दिया? सर्वर का है ना इंजन एक्स तो, हाँ। यहाँ पे इमेज आएगी Nginx की, हम्म। हमने उसका PHP का ले रहा है यहाँ पर। Nginx, you can define latest or you can define any version like Nginx 1.14 नहीं सर, आप 14 वो जो भी टैग ही है। दे दो ना लेटेस्ट, तो उसी से हो जाएगा, अगर हाँ। टैग भी नहीं दोगे तो वो लेटेस्ट ही उठाएगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। सो इट विल क्रिएट 3 एप्लीका। मतलब ये इज इट क्लियर ना, मतलब कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सिंपल, इट्स अ सिंपल बेसिक इंग्लिश। कॉन्सेप्ट समझ में आए तब तो इंग्लिश काम करेगी ना। इसमें ठीक। क्या रॉकेट साइंस है?
So kubectl, you can create hyphen f, or also you can define apply hyphen f, or if you want to recreate, replace hyphen f rs. ठीक है, replace will recreate your rs dot ml, like you have created your, let me do practical. Apply, first of all I am creating the replica set. The replica set is created. kubectl get pods. Okay, it is being created, it is just pulling the image nginx, downloading the nginx, pulling the image, so it is taking 1 or 2 minutes maybe. Okay, now it is running, right? Or you can hyphen o wide. Okay, so it will show you the ip. This is the ip of this pod, this is the ip of this pod, this is the ip of this pod. Age, restart, okay, node, nominated node, and readiness gates. ठीक है, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इनका मेन ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है. kubectl describe pod app one, कोई भी, I will take any of one of pod. Describe pod. Okay, so you can check detailed things about the this pod. The name of pod, namespace, in which namespace, priority 0, service account default. Okay, all the ip by ip, controlled by, this pod is controlled by replica set app 1. It means it's a part of replica set, it's not a manually created pod. Controlled by replica set app 1. Replica set is what I say, like is responsible for managing the 3 pods. It will always try to maintain the 3 pod. Okay, and this is the container id, all the things, and restart, ready state, and all जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब, ऑल द इंफॉर्मेशन आर बीइंग देयर. इवेंट्स हो गया, ओके, व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम, इज सक्सेसफुली असाइन, पुलिंग द इमेज, created. Okay, these are the things. And the one thing is that kubectl logs, what is the name of container. Okay, you can check the detailed logs. Okay, so this is also very good command in production environment. So it will give you detailed logs, what is happening in there. Suppose that any website is running there, so you can check how many hits are there being hitting by the user. All the details log on this particular pod is shown here, right? So endpoint is non-empty, मतलब जो backend में what is happening in backend, so you can check in the log section. कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो बैकग्राउंड में चल रही हैं, तो जो समझ आए वो समझ सकते हो. एंजल इसका वज़न ये चल रहा है, जो समझ आया, ठीक है, ये है चीज़ें. और इफ़ यू वांट टू चेक द लाइव लॉग्स, hyphen f, so whatever will be being happen just right now, so you can check by hyphen f parameter. It will show you the live what I say, live logs. Okay, live logs you can check here. Control C to get from out from here. Okay, so replica set में कोई confusion है अभी? और if I will सर मुझे तो बहुत ज़्यादा समझा नहीं रेप्लिका सेट, बहुत ज़्यादा. क्या कंफ्यूजन है रेप्लिका सेट में? तो कुछ तो है नहीं, बस 3 ही तो उन्होंने क्रिएट करा उनने, और क्या करा है इसमें? हाँ, वो तो मुझे समझ में आया, पर रेप्लिका सेट उसका नाम ही है क्या, रेप्लिका सेट? हाँ, नेमिंग कन्वेंशन यही है. अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन है क्या? ओके. नेमिंग कन्वेंशन मैंने थोड़ा रखा है, वो तो कुबरनेटी रखा हुआ है रेप्लिका सेट. रेप्लिका सेट, ओके. ठीक है, if I will delete any one of them, so it will create again new one. Basically it always trying to maintain the, so how to delete that one, जो आपने जितना आपने डिफाइन किया उतना तो मेंटेन रखेगा वो, है ना? हाँ, delete pod f1 ckp, delete it, and
container is creating 3 seconds. इसका what is the use case of this replica set? Any guess? What is the use case in the real time सर scenario? ये मतलब सर ये पॉड का वो जो स्टेबिलिटी मेंटेन करता होगा। जैसे सपोज करो कि लाइक समझे, समझ में कोई आया। जैसे मशीन, कोई जैसे एक मशीन है, यू हैव अ 1 3 मशीन, ओके, एंड वन मशीन इज गेटिंग हिट बाय 1 lakh यूजर एंड it got crash, okay. So the same thing is with the pod, like pod is getting the high traffic, high load, okay, some maybe some issues, so it got crash. स्केलिंग स्केलिंग कर रहा होगा ना सब। हाँ हाँ हाँ। सो मतलब ये कभी वेबसाइट डाउन नहीं जाएगी तुम्हारी कभी भी, स्केलिंग हमेशा अप चल ही रही रहेगी। है। अगर एक भी डाउन चलेगा सर, एक पॉड डाउन चलेगा तो इट विल अगेन क्रिएट अ न्यू पॉड, अगेन वन पॉड क्रॉट क्रैश बिकॉज द हाई ट्रैफिक, अगेन इट विल क्रिएट अ न्यू पॉड। सो इट विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द ठीक है, वेबसाइट को हमेशा अप रखेगा, इट विल ऑलवेज मेंटेन द वेबसाइट अप। कोई डाउट है कोमल, काव्य, और आपको कोई डाउट है? What is the difference between this and deployment? Because that also maintains number of replicas, right? Yesterday we saw that. वो बताऊंगा मैं अभी डिटेल में, अब इस पे आऊंगा, आई विल कम ऑन दैट वन आल्सो। Okay, but yesterday also we did the same thing, right? सेम थिंग है, डेप्लॉयमेंट और रेप्लिका साइड में माइनर से अंतर है बहुत, इट्स ओनली माइनर डिफरेंस ओनली हियर, द एप्लीकेशन डिफरेंस आई विल एक्सप्लेन। अपार्ट फ्रॉम Okay. दैट वन, एनी डाउट इन द रेप्लिका सेट? सर मिनी No. क्यूब से इसको कोई यूज करता है क्या? जब ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए तो फिर एकदम फाइनल मतलब जो यूज होगा टेस्टिंग मतलब में, कम ही यूज होता है वो। हाँ, टेस्टिंग, इतना यूज होता है, हाँ हाँ बस हाँ, टेस्टिंग। बिल्कुल। जैसे अगर आप डमी प्रोजेक्ट करोगे, यू विल डू सम डमी प्रोजेक्ट और सम होम वर्क ऑन कुबरनीटीज, सो इट इज़ अ बेस्ट वे। It will not take like अगर EK you if you want to set up the EKS, so it will take 25 minutes, 25 minutes they will take from AWS बड़े side. प्रोजेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं मतलब? Kubernetes बड़े they can use EKS. क्यूबेडियम से भी हम लोग कर सकते हैं ना, ईकेएफ से भी कर, ईकेएस से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। Now I will explain you one thing. Anshul, these are the different ways to create pods, right? हम्म So first you used pod kind, हम्म and second you use kind equal to deployment, हम्म and third is this one, third one. हम्म, yes, Okay, replica set. थर्ड रेप्लिका। ठीक है, दो ही होते हैं। सर कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आपको पॉड के लिए? हाँ, कोई भी एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके। एक होता है शेडफुल सेट होता है, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। स्टेटफुल सेट का ये रहा, ठीक है, धीरे धीरे मतलब एक्सप्लोर करेंगे, पता चलता रहेगा। रेप्लिका सेट डेटाबेस पे ज़्यादा यूज़ होता है, डेटाबेस पॉड्स क्रिएट करने में। सो लोड बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, हमारे वी हैव अ 3 पॉड्स, ओके। इफ यू वांट टू लोड बैलेंस, so it is already you can do by the service as well. So we have a 3 type of services here in Kubernetes. So first one is cluster IP, then node port, and then what I say, load balancer service. Can you repeat that, Anshul? Yeah. सर आप आराम आराम से पढ़ाओ ना, भाग क्यों रहे हो सर? एकदम धीरे धीरे चलो, 2 ही 3 लोग तो पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे चलिए ना सर।
होता है वो लोड बैलेंसर, ये कोई यूज़ नहीं करता, नो वन यूज़ लोड बैलेंसर सर्विस, ठीक है, नो वन यूज़ लोड बैलेंस सर्विस, नो वन यूज़ डेफिनेटली, मैं शायद कोई हज़ार लाखों में से कोई एक होगा, दे विल यूज़ बट they will not use load balance service because it's a very nonsense service, I would say nonsense, very costly, very costly, ठीक है. So cluster IP service and node port service, these are the very common and very useful service. Cluster IP service is for your internal यूज के लिए, ठीक है. एंड देन नोड पोर्ट फिर एक्सपोज टू आउटर वर्ल्ड, ठीक है, एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड, लाइक you have one pod, in this one pod website is running, so how to expose that application or website to the outer world, so anyone can enter the URL and they can get into the pod. सो ये इंटरनेट से जोड़ने का तरीका होता है नोड पोर्ट. आपका जो पोर्ट है अभी इंटरनल यूज केस में है, योर पोर्ट इज इन इंटरनली Kubernetes, in your Kubernetes internally. If you want to connect your port to the internet or external world or expose to the outer world, so we have a node port. Cluster IP is for internal use case, for load balancing or IP version. So if in your service, if it is not defining cluster IP, so then by default it's a cluster IP service. सर समझ में नहीं आया, सर्विस का यूज कैसे करेंगे? अभी यूज करेंगे ना, अभी करा का है मैंने यूज, अभी करेंगे ना हम. मैंने सर्विस समझ आ गई ना, सर्विस क्या होती है, वो उसका डेफिनेशन समझ में आ गई, बाकी करता क्या कैसे होता है वो नहीं समझा. अच्छा चलो ठीक है, अभी समझ आ जाएगा, अभी मैंने करा भी नहीं है, अभी तो मैं जस्ट थोड़ा सा कुछ बताया था. So first of all I will copy this and I will change the values as per my requirement. Anshul, just one quick thing. So the first one is used for cluster IP is used for internal communication between the pods. Load balancing you can say. Load balancing. Yes, like suppose that you have 3 pods, okay, so how to balance the load, like you have 3 pods and traffic is coming one pod only, so how to distribute the traffic on 3 pods equally? So in that case cluster IP will help in distributing the traffic between these 3 pods. Yes. सर इसको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है सर इस सर्विस को, या कैसे यूज करते हैं? YAML फाइल के थ्रू, YAML फाइल, ओके. And the second one is node port, just to expose the internal IP, I mean the IP to the external world, right? Yes. And what about load balancer? Load balancer is doing the same thing what node port does. सर IP कर रहा है, ये भी एक्सटर्नल वर्ड के लिए होता है. हाँ सुन लो, load balancer also will create the expose to the external outer world, but it also will create a load balancer into network load balancer into the AWS, like one pod is equal to one load balancer in the AWS. If we have a 3 pod, so it will create a 3 load balancer. Okay. So we'll see the practicals and then I'll ask questions. Instead of load balancer we will use an ingress controller. Have you heard about ingress controller? Anyone? No. सर सुना है. ठीक है, सबसे पहले we will use a cluster IP service. So these are the things. First of all I will copy cluster IP dot YAML. You can define YAML or you can define as your choice. सर एक्सक्यूज मी सर, ये हम कर क्या रहे हैं अभी, क्या करने जा रहे हैं? कॉपी तो cluster IP service. ओके, क्लस्टर IP, ओके.
Okay, because I have 3 pods, I want to create I want to distribute the load over 3 multiple pods equally. अभी क्या है कि एक्चुअली मैं बताऊं तो करंट मतलब सिनेरियो, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक तो होगा। ट्रैफिक तो होगा। आई हाँ, हैव 3 3 pod, मैसेज। I have 1, so for that I have 1 है ना, I have 1 2, these are the pods suppose, कुछ ऐसी नेम उसके 1 3। ओके, इसकी एक अपनी आईपी है, इट इज़ हैविंग देयर आईपी 1.1.1. 1.1.1.1 ऐसा है नहीं, लेकिन एज्यूम कर लो कुछ ऐसी 19 कुछ करके है। द आई पी इज देयर इन दैट रेंज, सपोज दैट इट्स द आई पी इज देयर, and suppose that this is the IP 1.1.1.3. If I want to send the traffic to this pod, so I will use this IP, right? So if I'm using this IP, so all the traffic will come to this application, this website, and this website will get crash, maybe crash because all the traffic is coming on this port. So always we will use the IP address. If I will use this IP, so all the traffic will come into this pod, and if I am giving this IP, so then it will come to this pod, and this pod may be crash very soon because it will cannot bear with high traffic. Is it correct now? Getting my point? Yes. Here, to give the solution, we have a cluster IP. What cluster IP will do? It will create a common IP. It will create a common IP. 2222222 is this. Okay, then I will give this IP, and all the traffic will come in this IP, and what will happen? Any guess? लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस आईपीस, ऐसा? हाँ, समझ गए कॉन्सेप्ट क्लस्टर आईपी का क्या मतलब है? समझा सर। तो क्या कर रहा है ये, लोड बैलेंस कर रहा है। सर एक बात बताइए, ये तो 3 हो गया, अधिक मान लीजिए 150 पॉड हैं, तो भी ये क्लस्टर आईपी जब हम यूज़ हाँ करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरा बैलेंस कर देगा, एक ही हाँ आईपी से वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? हाँ, सही है सर? यही तो ब्यूटी है सही सर। है फिर तो। अरे सही है फिर। अब यही चीज़ अगर आप AWS पे केस में देखो, तो आपको एक लोड बैलेंसर करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, उसकी अच्छी खासी वो जाती है। कुबरनेटी में फ्री सर्विस में हो जाता है, आपको NL भी लेनी जरूरत नहीं है, AL भी लेने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक द application load balancer in AWS, not network load balancer in AWS. Okay, it's a free service and it will सर ये does तो फिर everything. सेफर साइड के लिए सभी यूज़ कर लेते होंगे। हो ना हो फिर भी सेफर साइड की लगा दो, है ना? और क्या, हर बाय कोई करता डिफ़ॉल्ट। है। हाँ, हुँ। और क्या। In the this is the current scenario. This is the one pod IP, this is the IP, this is the third pod IP, and I am giving the common IP. This is the cluster IP. If the traffic on coming on this cluster IP, so then it will come distributing all over the pods whatever belong to this cluster IP. I will show you one thing. This is the IP, right? You can see app1 IP is this one, app second pod IP this, third pod IP is this. If I will send like this is IP, so all the traffic will come on this app pod. If I am giving entering the this IP, okay, then all the traffic of this may be crashing. I will give the common IP, so then all the traffic will distributing over this one. Cluster IP का ये लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट. So how to get the cluster IP? First of all, I need to check the label.
What should be the name of the cluster IP? This is a service. This is a API version v1 kind service. You are creating the service v. So always it should be the capital letter. Otherwise it will show the error. Metadata. What is the name of the IP? Cluster IP. कुछ भी दे देते हैं अच्छा for you. App 11 cluster IP. Selector. Service, this is the service name and it will identify their pod with the help of selector. तो मुझे यहाँ पे क्या डालना चाहिए कोमल काव्या उज्जवल what I need to enter a selector simple English selector Label. किसके लेबल Label from the metadata. Name A app11CI. I need to define here what values सर एक बार फिर से बोलिए क्या पूछ रहे हैं this is the service app1 CI so service will be created so how this service can identify their pods we have a 3 pods right सर उसके आईपी से यहाँ पे सिलेक्टर वैल्यू आएगी ना यहाँ पे उन पोर्ट के लेवल आ जाएंगे यहाँ पे we will define here their ports level Yeah. got my point or not Yeah, you will define the labels. identify Right? करेंगे ना सर और क्या लेबल है पोर्ट्स के what is the label of अच्छा। pods tier is equal to front end this is the label right Yeah. because then I will define the this service file so then this service can identify their pod मतलब समझ getting my point ना बात बताइए सर इसके आईपी से हम नहीं कर सकते आईपी से भी तो हर आदमी अपना पॉट नहीं बता सकता अरे आईपी तो तीनों के अलग अलग है ना we have 3 different IP ओके this is the common label ओके ओके with this label they can identify their pod right Kavya getting my point now Yes, Anshul. This is cluster IP, right? This one? cluster IP if I am entering the tier is equal to front end that means we have a 3 pods so this will be this service cluster IP will be applied on those 3 pods सर ये how you can say that is a 3 कैसे बोला इसमें tier is फ्रंट एंड में कितने pod आ रहे हैं हाँ 3 ही आ रहे हैं ना तो 3 ही तो होंगे लेकिन सर आप बात समझिए ना देखिए 4 हम करते या 5 जो तो वो भी हो सकता था ना तो मतलब 4-5 भी तो हो सकते थे ना हाँ यहाँ तो फ्रंट एंड हाँ अभी 3 ही है ना in for हाँ, this वो label we have only 3 pods सर ये लेवल अपने बाय डिफॉल्ट लिया है क्या नहीं मैंने एंटर किया था ना वहाँ पे एंटर किया था तब ओके तभी 3 के लिए हाँ सर ठीक है फ्रंट एंड पोर्ट नंबर 80 टारगेट पोर्ट 93 इसको भी 80 कर लेते हैं okay and you can define port number 8080 or your choice so we have a 2 port here this is the container port and this is the cluster IP port cluster IP port means like this is the cluster IP and define here 8080 and what is the container target port this is a port number 80 right it's a Nginx works on port number 80 ठीक है तो क्लस्टर आईपी का पोर्ट क्या हमने डाल दिया यहाँ पे 80 so if I am defining this address so this is the cluster IP address clear so this is the port this is the target port कोई any confusion नहीं सर so here I will define a port and target port this is a container port this is a service port Q12 okay 3 port cluster IP this is the port
टी इज इक्वल टू फ्रंट एंड. ठीक है. This is the service. This is the service I have created. Cluster IP and the IP cluster IP. This is the and the port number 8080 selector. It will select their port. सर देखिए 150 पॉड है तो हम सेलेक्टर का कुछ भी जो भी हम अपने हिसाब से जो वैल्यू देंगे बस वो चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक हाँ वैसे चल जाएगा राइट. So you can check the endpoints. So how many endpoints we have for this cluster IP? 3 endpoints. Why? तीन ही है ना. Because there are 3 pods. Right. टारगेट 3 है तो 3 ही रहेगा ना. ये पहला this is the first port, right? IP then colon 80, second port, third port, right? So if I am hitting on this one with this port, so it will distribute the traffic on their own endpoints. Is it clear now? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही जारी रखो. इसको अच्छे से practice सर करो. सर इसको एक चीज बताइए. इसको एक इसके थोड़ा एक आगे का एक्सटेंशन करिए ना. इसको हिट करके भी करिए ना. ये आगे हम इसको लाइव थोड़ा हिट कर कैसे होगा ही देखेंगे. नहीं ना, कुछ चल ही नहीं रहा ना. कुछ नहीं चलेगा. क्या चलेगा, कुछ है ही नहीं. इसको तो ऐसा कुछ ऐसा एप्लीकेशन हो जो हम इसको हिट करके या कुछ करके से देख पाए. वो मैं करा के दिखा दूंगा एक बार. अच्छा ठीक है. पूरा सेटअप दिखाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में कुछ चलाना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा. ठीक है सर. तो वीडियो जरूर रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिएगा. हाँ, मतलब ये चीज़ क्लियर हो ना, कॉन्सेप्ट. इज इट क्लियर? हाँ ये तो क्लियर हो गया. ये क्लियर हो गया. Anshul, can you tell the difference between the deployment and replica set? Because I'm little confused because they both look similar. उसमें एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ. आई विल शो यू. kubectl दिस इज द डिप्लॉयमेंट काइंड, राइट. मैं सो नेक्स्ट में बताता, चलो कोई नहीं. So this is the what I say syntax of the deployment. Okay, if I go to the replica set, so this is the replica set template, match labels and labels. Okay, and then template specification, match label, container port. ठीक है. So if I will create this one, so it will create a replica set by default. सर आप कंट्रोल कर सकते हैं रेप्लिका सेट से पॉड्स को, है ना. We can also define user deployment for the same. Okay, but deployment will create the replica set also. Deployment with the help of the. Six pod. kubectl. So it is creating the multiple pods 1 2 3 4 5 6. It will also create the replica set also. Okay, so here if you will create a deployment, so it will create the replica set also for you. Okay, it's a just like additional version of the replica set deployment, you can say. If you will create a deployment, so always it will create a replica set to maintain the replicas. And the minor difference is there.
label and set a match label template. Okay, the first thing is that it will create the replica set, and also the difference, I'm just skipping in my notes. सर हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जैसे कि सर रेप्लिका सेट क्या होता है कि सर स्टेबल स्टेबल पॉड्स हो, मतलब एक रनिंग स्टेबल पॉड्स हो, राइट? और उस टेम्पलेट को यूज करता है डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन, हम्म ऐसा भी कह सकते हैं, है ना? हम्म। ठीक है, माइनस डिफरेंस इज रेप्लिका सेट फॉर द लोअर लेवल हो गया, ठीक है, डिप्लॉयमेंट फॉर द हायर लेवल एप्लीकेशंस हो गया, ठीक है, इफ यू वांट टू रोल बैक वर्जनिंग ऑफ द एप्लीकेशन. Okay, so this is the interrelated question like replica set difference between the replica set and deployment. So there's a very minor difference, but in the product, but you will in your company you will always use the deployment only. You will not the replica set, but if you will create the deployment, so it will create the replica set on the behalf of deployment. ठीक है काव्या? मतलब सर कोई ज़्यादा हम ऐसा मायने भी तो कोई ज़्यादा बोल मेजर सकते हैं नहीं है. ना सर, डिप्लॉयमेंट जो है वो इसको मतलब रेप्लिका सेट्स का टेम्पलेट यूज करता है, हाँ हाँ और और ये जो है अपना रेप्लिका सेट वो मतलब कितने नंबर्स ऑफ पॉड्स रन हो रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। हाँ, मतलब डिप्लॉय. ऐसे का ऐसा प्रोडक्शन, हाँ ऐसा का ऐसा डिप्लॉयमेंट में मतलब हाँ दोनों आसपास ही हैं मतलब, लेकिन डिप्लॉयमेंट यूज करता है उसका टेम्पलेट हाँ, रेप्लिका सेट का, जैसे का जैसा जितने जैसे पॉड्स रन हो रहे हैं वैसे का वैसा टेम्पलेट वो यूज करता कह है सकते हो, यू कैन है ना? से. हाँ, deployment is an additional version of replica set. सर ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा थोड़ा सा, है ना? थोड़ा लिंक लगाया नहीं तो फिर सब रह जाएगा। हाँ सर आज रात में वीडियो भेज देंगे दोनों? हाँ, भेज देंगे. इसके अलावा ठीक। कोमल आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं समझ आ गया सब? नहीं। फोकस नहीं था? हाँ फोकस नहीं था? हाँ फोकस था, थोड़ा थोड़ा स्किप हो रहा था बीच में, तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस भेज देना। कोई आपको याद कर रहा है? चलो ठीक है, भेज देंगे. हम्म। चलो ठीक है गाइस, वी विल मीट ऑन मंडे. ओके, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग एज वेल. ठीक है सर, ठीक ठीक। ओके बाय गाइस, गुड नाइट. रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा नहीं तो मंडे तक बेकार हो जाएगा। हाँ.